हेलो गाइस, आज हम आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द आरबीआई एस्टैब्लिश्ड? राइट, आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? सो आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1935। सो 1934, 1947 एंड 49 में किया हुआ था। 34 में गाइस, दिस वाज द ईयर द आरबीआई एक्ट वाज पास्ड, राइट? सो 1934 में आरबीआई एक्ट पास हुआ था। एंड 1935, सो आरबीआई स्टार्टेड फंक्शनिंग ऑन 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई ने फंक्शन करना स्टार्ट किया था। 1947, it is related to India's independence, and 1949 RBI was nationalized, right? So 1934 में RBI एक्ट पास हुआ था, right? 1949 में RBI का नेशनलाइजेशन हुआ था। एंड 1935, 1 अप्रैल 1935 RBI का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, राइट? Second question is, where was RBI's central office initially located? When was it shifted to Mumbai? So RBI's central office initially कहाँ located था? ये कोलकाता में, right? Initially it was in Kolkata, then it was shifted to Mumbai in the year 1937. So correct option is option B, right? 1947 दिल्ली, ऐसा कोई हेडक्वार्टर था ही नहीं आरबीआई का दिल्ली में, राइट? ऑप्शन बी, प्रीवियसली इट वाज हेडक्वार्टर्ड इन कोलकाता एंड इन द ईयर 1937 it was shifted to Mumbai. So this is the correct answer, right? Option C and option D, it is incorrect, right? Question number 3, when was RBI nationalized? So nationalization of RBI was took in the year 1949. So 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ। अब यहाँ पे चार और ऑप्शंस हैं। 1937 में क्या हुआ, 1947 में और 1955, राइट? सो 1937 में जैसा हमने देखा कि आरबीआई का हेडक्वार्टर जो है मूव किया गया मुंबई में, कोलकाता से मुंबई में इसको शिफ्ट किया गया 1937। सो ये एक रीज़न हो गया 1937 कि यार 1937 में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया। बी 1947, इसमें क्या हुआ कि इसमें तो ये खाली इंडिया का इंडिपेंडेंस ईयर दिया है। 1949 यहाँ पे आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ कि 1 जनवरी 1949 आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया। नेशनलाइजेशन मीन्स द गवर्नमेंट टुक द फुल कंट्रोल ऑफ द बैंक। 1955 एसबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था। सो 1955 इज रिलेटेड टू एसबीआई's नेशनलाइजेशन। 1949 आरबीआई नेशनलाइजेशन। 1937 हेडक्वार्टर मूव किया गया कोलकाता से मुंबई, राइट? नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? Which of the following is the main purpose of RBI as per its preamble, right? So main purpose of the RBI as per the preamble. So the answer is option number B, to regulate the currency and credit system in the country's interest. To regulate the currency and credit system in the country's interest is the main purpose of RBI as per its preamble. Now बाकी ऑप्शंस जो दिए हैं, टू ओनली इशू
करेंसी नोट्स, कलेक्ट टैक्सेस। टैक्सेस कलेक्ट करने का काम तो आरबीआई नहीं करता, राइट। टू इशू, टू ओनली इशू करेंसी नोट, तो खाली करेंसी नोट भी इशू नहीं करता, करेंसी नोट इशू करता, लेकिन दिस इज नॉट द ओनली फंक्शन, राइट। सो लेट्स एक्सप्लोर द ऑप्शन। Issuing currency is one of the function, not the only one, right? Regulate currency and credit. This is the our correct answer. So RBI manages money supply, ensure financial stability and promote the growth, right? So this is our main purpose of the RBI, to manages money supply, ensure financial stability and promote the growth. 3. The tax collection. It is not the part of RBI, it is the part of or job of the income tax department, right. Manage only forex, foreign exchange, to manage only foreign exchange, right. RBI does manage foreign exchange, but not only that, right. So RBI करेंसी नोट्स भी इशू करता है एंड फॉरेन एक्सचेंज भी मैनेज करता है, राइट। बट खाली एक ही चीज़ नहीं करता, मल्टीपल फंक्शंस आरबीआई के। यहाँ पे टर्म यूज़ हुआ है क्रेडिट सिस्टम। सो क्रेडिट सिस्टम का मीनिंग क्या होता है? द सिस्टम ऑफ लोन्स गिवन बाय बैंक, राइट। सो बैंक्स जो लोन प्रोवाइड करते हैं उस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रेडिट सिस्टम बोलते हैं। सो आरबीआई रेगुलेट दिस थ्रू इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट्स एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 5, who governs the affairs of RBI? Who governs the affairs of the RBI? Central Board of Director. The option C is the correct one, right? The Central Board of Directors governs the affair of RBI. So Prime Minister govern करते हैं? नहीं. Minister of Finance and Supreme Court. Supreme Court तो नहीं करता, right? सो ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर तो नहीं करते कि आरबीआई इज इंडिपेंडेंट, राइट, नॉट डायरेक्टली रन बाय द प्राइम मिनिस्टर। बी, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, राइट। सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी ऑफ आरबीआई के अफेयर्स को गवर्न नहीं करते। सो मिनिस्ट्री ओवरसीज पॉलिसीज बट आरबीआई इज मैनेज बाय इट्स बोर्ड, राइट। सो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज द RBI affairs. Central Board of Directors, this board appointed by government and manage RBI's work, right? So Board of Directors क्या होता है भाई? A group of top level decision makers managing an organization, right? Question number 6. Under which section of RBI Act are the governor and deputy governor appointed? Under which section of RBI Act, right? So option B is the correct one. Under section 81A of the RBI Act, governor and deputy governors appointed. So सेक्शन 7, 9 एंड 4 ये भी देख लेते हैं किसके रिलेटेड है। सेक्शन 7 डील्स विद पावर ऑफ गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शंस टू आरबीआई। अंडर दिस सेक्शन गवर्नमेंट जो है आरबीआई को डायरेक्शन देती है, राइट। सेक्शन 7 के अंडर सेक्शन 8(1)(a), दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। Governor and deputy governors are appointed under this section, section 8(1)(a) of RBI Act. Under this section the governor and deputy governors are appointed. Section 9 is related to local boards and section 4 deals with establishment of the RBI, right.
Question number 7. What is the role of RBI's local board, right? RBI में जो local boards है तो उनका रोल क्या होता है? So the option C is correct answer, to advise the central board and on local matters, right? To advise the central board on local matters. तो यही जो है रूल होता है आरबीआई के लोकल बोर्ड का, टू एडवाइज सेंट्रल बोर्ड ऑन लोकल मैटर्स. Print note, to print currency note is not printed by RBI presses, not local board, right? So notes are printed by RBI presses, not the local boards. Option B, manage forex, done by RBI headquarter, not the local boards, right? Advise the central board on local matters, right? So this is correct. Local board, east, west, north, south, these are the local boards, give advice on regional economic issues, right? Collect taxes, works done by the CBDT, not the RBI, right? So local board क्या होता है यहाँ पे कि regional advisory committee helping RBI understand local problem. Question number 8. Which board was set up in the year 1944 to strengthen financial supervision under the RBI, right? So which board was set up in the year 1994 to strengthen financial supervision under RBI? So the option C, Board for Financial Supervision, BSF. So BSF को full form क्या होता है? Board for Financial Supervision. इसको सेटअप किया गया था 1994 में टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल सुपरविजन अंडर आरबीआई. एमपीसी क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, राइट? सो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसको 2016 में फॉर्म किया गया था टू डिसाइड द रेपो रेट. ऑप्शन बी था डिपॉजिट इंश्योरेंस बोर्ड. इट इज़ द वर्क ऑफ DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन. एंड BFS, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन. It is created in the year 1994 to supervise banks, NBFC, and financial institutions. And Credit Information Board, no such board exists, right? So supervision का meaning क्या होता है? To monitoring banks to ensure they don't collapse and follow the rules. Question number 9. Which of the following act is not administered by the RBI, right? So RBI Act is administered by the RBI, right? Banking Regulation Act 1949. It is also regulated by RBI. Banking Regulation Act. FEMA 1999, that is the Foreign Exchange Management Act, it is also administered by the RBI. And the option D, it is the correct answer, Income Tax Act 1961, which is not administered by the RBI, right? So RBI Act correctly administered by the RBI, right? Banking Regulation Act, RBI regulates all bank under this act, right? And FEMA, Foreign Exchange Management Act, the RBI manages foreign exchanges under the this act. So Income Tax Act, it is not administered by the RBI.
So FEMA, that is stands for Foreign Exchange Management Act and deals with foreign currency trade and remittances. Question number 10. Which is a wholly owned subsidiary of the RBI? NABARD is not the subsidiary of RBI. SBI is also not a subsidiary of RBI. Exim Bank is not the subsidiary of RBI. So BRB NMPL, Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Private Limited, is wholly owned subsidiary of the RBI, right? So Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Private Limited, it is a wholly owned subsidiary of the RBI, right? So NABARD is not the subsidiary of RBI. It was created by RBI but now owned by the government, right? SBI controlled by the government. Bharatiya Reserve Bank Note Pooran Private Limited, this is our correct answer. It's a note printing company, right? Exim Bank, it's a government owned export bank, right? So subsidiary का meaning क्या होता है भाई? A company fully controlled by a parent organization, right? Company fully controlled by a parent organization, or you can say it's kind of a child company, right? So in this part, we have discussed 10 questions. In the upcoming parts, we will discuss the few more questions. Thank you.